फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की इस मीटिंग में मैं कुछ पॉइंट्स पहले आप लोगों से शेयर करूंगा जो अभी 3 दिन पहले 22 को हमारे जो मलेशिया से हमारे सीनियर हैं उनका एक एसेंशियल कैंगन वर्कशॉप हुआ था। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद आज की टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत रेलेवेंट है आगे का जो मैं आज आपको आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हाउ टू डू या हाउ टू स्टार्ट कैंगन बिजनेस। तो उस पे बहुत रिलेवेंट है ये, इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स वहां से मैंने लिए हैं। क्योंकि आप सबको पता है इनेजिक को 5 साल हो चुके हैं इंडिया में, और हर कंट्री की तरह यहाँ भी बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टमर को या अपने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कंपटीशन के बारे में भी, क्योंकि कई बार हर चीज सेम दिखती है। एक एक कह ले अननोन आदमी जिसको कुछ पता नहीं है आयोनाइजर्स के बारे में, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये स्लाइड जो देख रहे हैं आप, ये पहला स्लाइड है कि आज तक इनेजिक का कोई भी कंपटीशन नहीं है। फैक्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है इनेजिक का। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि हम इनेजिक से अच्छे हैं, इनेजिक से बेहतर हैं, बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि क्लेम या कंपटीशन उसी को मिलता है जो सक्सेसफुल होता है। तो इनेजिक के बारे में एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन दिया गया था एसेंशियल कैंगन वर्कशॉप में। उसके 2-3 स्लाइड्स मैंने लिए हैं कि इतनी जानकारी कम से कम हमको जरूर होनी चाहिए अगर हम मार्केट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 15 रीजंस बताए गए हैं कि इनेजिक क्यों बेस्ट है आयोनाइजर में। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग शेविंग के लिए जो टूल्स यूज करते हैं, आप सबको पता है कि ये शेविंग का ये वाला भी काम करता है और ये भी काम करता है। बट इसके प्राइस की बात करें तो ये 10 रुपए में मिल जाता है, मैक्सिमम 20 रुपए में मिल जाता है, लेकिन ये 2000 का होता है। तो दोनों का जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है, बट स्टिल हम सबको पता है कि इसका क्या कंफर्ट है और इसका क्या कंफर्ट है, हम सबको पता है। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि मारुति का 800 कार में भी आप जर्नी कर सकते हैं और BMW में भी आप जर्नी कर सकते हैं। बट ये दोनों का अगर रेस किया जाए तो आपको पता है कंपटीशन कहीं भी नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से ये इनेजिक है और ये अदर कंपटीटर्स हैं। ये हमें अपने ब्रेन में रखना है और लोगों को बताना भी है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर है BMW के अंदर, वो पावर मारुति के अंदर कभी भी नहीं हो सकता है। तो गेम पावर का है, ये क्लियर करना है। एक्चुअल में कंपटीशन जो है वो हमसे डरते रहते हैं, बट कई बार हमें जब जानकारी नहीं होती है तो हम लोग भी कंपटीशन से डर जाते हैं। तो हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है, कंपटीशन के बारे में जानकारी रखनी है कि मार्केट में कौन कौन से कंपटीटर्स हैं। इसके अलावा सुदेश सर भी अपने उनका जो कोर्स है उसमें उन्होंने कई कंपनियों का पूरा पोस्टमार्टम करके बताया हुआ है कि उनके प्लेट्स कैसे होते हैं, तो वो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं रखने से कई बार हमारा सेल खराब होता है। और आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च करने में और कुछ कंक्लूजन्स निकालने चाहिए। जैसे कि आपने कुछ बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि आप एक बिजनेस ऑनर हैं यहाँ पे और आप कैंगन बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ करने की प्लानिंग से आए हैं और करने जा रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए जिस तरीके से लोग बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद करते हैं। तो आप ऐसा सोच के इस बिजनेस को करें और कंपटीशन को रिसर्च करें जैसे आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई CNF लिया हो या किसी कंपनी का पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हो पूरे इंडिया का। तो कंपटीशन के बारे में लोगों को बताना है कि लोग विक्टिम ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बता के आते हैं कैंगन वाटर और वो गूगल पे जाते हैं और गूगल पे आपको पता है जिसका ऐड होगा, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐड करेगी, वो कैंगन वाटर का वो जो वर्ड है वो भी ले लेते हैं और कैंगन डालने से वो पहले आ जाते हैं। तो कई बार हमारे प्रोस्पेक्ट विक्टिम हो जाते हैं उनके, और बाद में 6 महीने बाद उनको कैंगन वाटर मशीन दोबारा लेना पड़ता है। ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोगों को वीडियो के थ्रू भी मिले हैं। तो हमें एजुकेट करना है, एम्पावर करना है अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, और ये बताना है कि वी आर द ओनली गोल्ड स्टैंडर्ड आयोनाइजर। हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड आयोनाइजर हैं और हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। ये 15 पॉइंट्स हैं जिसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पिक्चर वे में रखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पहली बात है कि इनेजिक का आयोनाइजर
ओनली वन आयोनाइजर है जो मेडिकल ग्रेड है। ये हमको पहला लाइन ही सबसे अलग करता है और इसको ISO 13485 मिला हुआ है। सर्टिफिकेशन किसी दूसरे आयोनाइजर को या दूसरे किसी भी पानी की मशीन को आज तक नहीं मिला। सेकेंड थिंग क्या है कि गोल्ड सील अवार्ड हमें मिला हुआ है। कई कंपटीटर्स भी आपको गोल्ड सील दिखाएंगे, बट उस पर अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं कुछ स्लाइड्स आपको शेयर करूंगा कि WQA के अंदर मेंबरशिप अलग होता है और गोल्ड सील अलग होता है, जो सिर्फ एनर्जिक को मिला हुआ है। ये 2 पॉइंट ही हमको सारे कंपटीशन से अलग करता है। थर्ड चीज क्या है कि हमारा जो आयोनाइजर है, आप सबको पता है कि फर्स्ट 20 इयर्स जापान में ये हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा था। तो जापान के अंदर 6500 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो एडल्ट डिजीज के ऊपर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता है और वो एंडोर्स करते हैं हमारे आयोनाइजर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को इतने सारे डॉक्टर्स एंडोर्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट, आप सबको अभी पता है, आप लोग सब एक्सपीरियंस्ड है कि आयोनाइजर के अंदर जो प्लेट्स होते हैं वही उसके इंजन होते हैं। तो इंजन कब काम अच्छा करेगा? जब वो पावरफुल होगा। तो इंजन का जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया बहुत मायने रखता है और एनर्जिक नंबर 1 है इस मामले में। हमारी 4 प्लेट की मशीन दूसरों की 12 प्लेट की मशीन से ज्यादा सरफेस एरिया देती है, क्योंकि हम लोग थिक और लार्ज प्लेट्स यूज करते हैं। प्योरिटी की बात अगर करें, चूंकि हम लोग एनर्जिक गोल्ड स्टैंडर्ड है और आयोनाइजेशन में पायोनियर कंपनी है, तो ये अपने ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग 99% प्योरिटी वाला टाइटेनियम और प्लैटिनम यूज करते हैं। तो अगर आप दूसरे आयोनाइजर्स यूज करेंगे, कोई आपका प्रोस्पेक्ट करता है, तो उनको आप एजुकेट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने चीप मेटल्स यूज किए तो वाटर पॉइजनिंग हो सकती है, मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। तो मामला हेल्थ का है, हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको बेटर ये होगा कि आप RO का पानी पिए, और अगर आयोनाइजर लेना चाहते हैं तो कैंगन का सिर्फ लेना चाहिए। 45 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, ये हमको सबसे अलग करता है। और एनर्जिक एकमात्र कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो डायरेक्ट मार्केट में इनके 38 ग्लोबल ऑफिसेस हैं और ओसाका में ये प्रोडक्ट बनता है और वहीं से शिप होता है डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री उसके ऑफिस में, और वहां से आपके घर पे शिप होता है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। और 45 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये मैं पॉइंट कवर कर ही चुका हूँ कि जापानीज मैन्युफैक्चरर, जापान अपने आप में एक नाम है, एक क्रेडिबिलिटी है जापानीज की, तो आप सबको पता है। और ये हम लोग जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं उसकी वजह भी यही है। और इवन मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पहले दिन जापान का नाम सुनने से बहुत बड़ा एक क्रेडिट मेरे माइंड में आया था कि वो लोग चीटिंग नहीं करते हैं। इसके बाद हमारी जो मशीन है वो नॉन स्टॉप आयोनाइजेशन करती है, ओवरहीट नहीं होती है। कई बार लोगों ने जब दूसरी कंपनी का मशीन लिया तो उनके फीडबैक्स मिले कि 15-20 मिनट चलाने के बाद उनको मशीन ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो ओवरहीट हो जाता है मशीन। बट हमारी मशीन, आपको पता है, कई लोगों ने ऑफिस खोल के लोगों को पानी शेयर कर रहे हैं, 500-1000 लीटर, कई लोग 2000 लीटर पानी शेयर करते हैं और कभी भी हमारी मशीन ओवरहीट नहीं होती। तो ये हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है। बिगेस्ट फ्लो रेट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे वाटर आयोनाइजर को कंपनी बोलती है कि ये जनरेटर है, मतलब आप इससे 6 लीटर पर मिनट तक पानी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके सोर्स वाटर पे और डिपेंड करता है आपकी नीड पे। तो 6 लीटर तक पर मिनट पानी देना किसी भी किचन के प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारी कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट, इसलिए बहुत कंपटीशन से अलग हो जाता है। 10th पॉइंट है कि दुनिया में ओनली वन आयोनाइजर है जो 2.5 और 11.5 का पानी देता है, क्योंकि पीएच स्केल को इतना नीचे लेके जाना और पीएच स्केल को इतना ऊपर लेके जाना बिना एनहांसर के पॉसिबल नहीं है। और एनहांसर हमारी मशीन में हम लोग जो यूज करते हैं, आप सबको पता है, वो सॉल्ट वाटर है, लेकिन इसको कंपटीशन कुछ अलग तरीके से भी प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है कि हम सिर्फ सॉल्ट वाटर यूज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कंपटीटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? उसका रीजन है कि हमारी मशीन में पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो किसी भी आयोनाइजर के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी मशीन आप देखते होंगे, जब आप चलाते हैं और एक पानी से दूसरे पानी में जाते हैं तो क्लींस करके लिखती है और खुद ही अपना मशीन वो क्लीन कर लेती है अपने आप। तो आपको लोगों को एजुकेट करना है कि आप 2.5 और 11.5 पानी, जो बहुत यूजफुल पानी है आयोनाइजर का, और ये पानी आपको सिर्फ हमारी मशीन से मिल सकता है। ये मैंने आपको बात बताया कि ओनली आयोनाइजर है हम लोग जिसको ई क्लीनिंग सिस्टम मिला हुआ है। और हमारी मशीन हार्ड वाटर से अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि मशीन अपने आप को क्लीन करती है।
हार्ड वाटर आप यूज करते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको क्लीनिंग 15 दिन पे कर लेना है। अगर आप सॉफ्ट वाटर यूज कर रहे हैं, अच्छा पानी यूज कर रहे हैं, तो आपको महीने में एक बार ही क्लीनिंग करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार बताता चलूँ आपको कि क्लीनिंग जरूर करिए हर महीने। लॉन्ग टर्म में आपकी मशीन स्पॉयल ना हो, आपकी मशीन खराब ना हो, इसके लिए आपको ई क्लीनिंग हर महीने कर लेना है। 3-4 महीने बाद डीप क्लीनिंग करना है। ये सारे हम लोग टीम को अपने एजुकेट करते रहते हैं। 230 वॉट्स है हमारी मशीन का, मतलब ये बहुत पावरफुल यूनिट है हमारा। दूसरे जो एनालाइजर्स हैं उनके वॉटेज बहुत कम होते हैं। लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैन है, आप सबको पता है 15 to 25 ईयर्स का लाइफ स्पैन है कंपनी की मशीन का। और ये मशीन अगर हम लोग प्रॉपर यूज करें तो ये लाइफ टाइम चलेगी और हमारे लाइफ के बाद भी चलेगी। 5 ईयर्स की वारंटी है। There are so many XYZ companies out there in the market. You can use it when you need them, right? So that's the whole point of sharing this session with all of you. The 15 reasons why Enagic has no competition. Now, it's been last 5 years that I've been associated with Kangen, and when I was going to buy my machine also, before I could buy it, my dad researched and found a lot of companies. And then I attended one such similar workshop that Mr. Samsia and Mingwei conducted. And that is where I got a lot of clarity about the product that I should actually be choosing for my family's health. So, which is what I'm so excited to share with all of you here, the 15 reasons why Enagic has no competition. So I just want to ask you all, right? Now, before coming into this meeting, some of y'all, you may have heard of other companies, other brands that are already promoting ionized water or something similar to that of Kangen water, right? And some of y'all, this is completely new to you. So this segment is for all of you who are with us. And before you can start off, the first thing that you need to do is to identify the different categories of competition. What are the different categories of competition? The first one is the non-machine related. The second one is a water filtration system. The third one is an alkaline water filter. And the fourth is a water ionizers. Now, these are different categories. Let's break it down and let me share it with you. The first one is a non-machine related. Now, these guys, they claim to produce something called as alkaline water. And they have a lot of benefits, XYZ and all of that, right? But what happens is the way how they make their waters alkaline is by adding something into it, which is either by putting these pills or going through this ceramic balls of filters, or could be this jug as well, where you pour a clean water here, it becomes alkaline. But ask yourself a question: when you're drinking water from these products, and which is supposedly alkaline and good for your body needs to filter out all these chemicals that you're adding into your system, right? So what happens at that time? Your kidney is filtering out all these chemicals, I can say, or all these minerals, so-called, and sooner or later it can either cause kidney damage, liver damage, or even go to the extent of forming kidney stones. Now that is something that we don't want just for ourselves, or we don't want it for our entire family. That's why when you Google alkaline water, many of the times our people, when they see a Kangen demo, they get misled, or they remember the alkaline part and they go on Google and search for alkaline water. And you will find a ton of articles that says long-term drinking of alkaline water is nonsense, not good for your body. Now they're talking about waters made by these devices or these products. Whereas when you look at Enagic machines, we go through a different process of making the water alkaline, which is an electrical charge change process. Whereas these guys go through a chemical way of making it alkaline. So one is adding something and making it alkaline, and the other one is we're splitting the water into two streams, one acidic and one alkaline. So if you're using your Kangen machine, just put in a number 2 so that you can agree with me on what I'm saying, that the water gets split and we don't add anything in the water to make it alkaline. And apart from just the alkalinity alone, there are two other properties that you get from the Kangen water, which is the antioxidation and the microclustering, that you will probably not find in any other water out there unless you go to the mountains and the springs and all the holy waters, right? So that's point number 1. So just clearly from this, you can understand that point number 1, if someone tells you that this is a competition, it's not a competition after all. Let's look at point number 2, water filtration system. Now, these are companies that produce machines that cleans the water, because in many countries, the tap water is not clean. So it's not feasible for you to drink the water directly from the tap. So what do? You need to get the water filtered first. And then
this filter water, they're just clean, but that doesn't mean it is good for your body. That means that they don't have antioxidants in them, not alkaline, and not microcluster, right? In fact, some of these systems like reverse osmosis, they even remove the minerals from the water, demineralizing the water. And WHO has published a 16-page document on the harmful effects of drinking RO water. So you can see that these guys, they are not a competition to us after all. In fact, if you know anybody selling water filters, you probably need to make them your friends, because our Kangen machines are not water filters. We need to give clean drinking water as input to the Kangen machine. And these companies, they actually help us make the water clean. So if you know anybody, just make them your friends tomorrow. They could become your sellers as well. Just like how Sam says, right? Bring in more sellers so that they help in more customers to benefit from the Kangen machine, right? So that's point number 2. So these guys are not competition. You can keep them as an ally, so that you can use the pre-filter first to clean the water and then introduce that into the Kangen machine. Let's look at point number 3, alkaline water filters. Now these are companies, it's a combination of 1 and 2. That's why it's 3. So when you add 1 plus 2, you get 3. So what they do is they clean the water first, go through a filtration process, and then they have a cartridge that induces minerals and makes it alkaline. So it's basically a combination of 1 and 2. There's so many companies out there in the market. In India, a lot of these companies are there. They're nothing but RO filters with just chemical induced cartridges inside. So this is point number 3. Let's look at point number 4. And this is something that all of you need to pay attention to, because these guys, they claim to produce water similar to that of our Kangen machine. And they say they're even better and cheaper. They're partially right. Yes, they are cheaper, but absolutely not better. Think about this. Something that is cheaper obviously need to be used. They use cheap quality materials. When you're using that to consume for your family's health, you wouldn't want to go in for something that is cheap. Maybe if I want to drive my car, I can put a cheap fuel, right? But I will never want to put cheap fuel into my body. If you guys agree to that, just type in agree on the chat, right? So thank you. Now, when we go out in the market, there are so many companies out there that actually, present their products. And the problem is 99% of the times, all of us, right, including myself, I've been there, I was confused. How many of you here, you were confused when you saw such companies, and probably they were so convincing that you might have even considered getting one of those machines? If yes, then just type in confused on a chat. Right now, the reason why you guys confused is because no wonder there's so many brands out there. Most of them, they look alike, probably made in the same factory, just different brand names. So today we're not gonna talk bad about these companies, because that's not what we do in Enagic. Because when you go into an Enagic website, right, we don't compare our products with anybody else. But when you go to their websites, all of the companies, they compare their products with Kangen. So today we're just going to open up everything that we are doing good at, and then you can take a call for yourself, whether you want to invest in Enagic or you want to do your research and invest in other brands, right? So that's the point here. So let's bring it down and clarify why 15 reasons Enagic has no competition. Starting with the first reason, we're the only ones with the ISO 13485 medical standards certificate, which what it means is that this standard is given to those companies which makes products, or the manufacturing facility, every single material used inside the machine has to be of medical standards. If not, of course they wouldn't be receiving the certificate. And the second thing is, you may be aware of all these machines in the hospitals, in the ICUs, the heart rate monitors, and a lot of machines, the MRI scanners and all of them. The manufacturers need to have the certificate. And Enagic is the only one in the water industry to have this certification. And let me show you that certificate. This is the certification that is issued to our factory in Osaka, Japan. And you can say complies with the requirements of ISO 13485. And it is valid for the following scope, which is design, manufacture, sales, servicing, and distribution of electrolysis water generators for medical use. The last 3 words are the most important: for medical use. So think about this. You're getting a product where every single material or every single parts used in the product is of medical standards. And like we already, like most of you all agreed that you want to only put the best into your body.
this is the best. So when I talk about that, right, A to Z, all the medical standards the company has met. And let's do a bit of a comparison here, just for fun. And let's go and look at the other companies. They always show their comparison chart, right? And they talk about their company and then Enagic. So in their and the criteria, they type in ISO, they put a tick in their company, and they put a tick in Enagic. But you ask them, is that ISO 13485? Unfortunately, no, because they either will have 9001 or some other certificate that's on probably on how you run the company, but nothing to do with the ISO medical standards for manufacturing, which is ISO 13485. That's why, if you guys remember from Mingwei, remember this number, the ISO 13485. This is a number that you all have to remember. So what it means is the other companies, they have failed to meet the expectations of the medical standards. And if that is the point, I would not even want to give a second chance. I wouldn't even give another minute talking about the other companies. I would rather just directly go with Enagic, and that's what we've done. And that's what all of our users, we've done, getting the machine and we started using it. So now, if I've shown this point, it already proves that A to Z, we've taken care of all the medical standards in making the device. Now, does that already mean that we are the best? If you all, how many of you all here, you feel that we are the best already? If yes, just type in best on the chat. BEST. Thank you. A lot of you all responding, right? Thank you so much. Now, since most of you all agree with me and say that we are the best, I think we can cut short the presentation and end it right here, right? Because I don't have to show you the remaining 14 points. Would you like to see the remaining 14 points? If yes, just type in 14 on the chat. Yeah, thank you. Okay, since you guys asked so nicely, I'm going to show you the rest 14, right? So let's look at point number 2. This is a Gold Seal Award from WQA, Water Quality Association. Now, ladies and gentlemen, I want all of you to stop doing whatever you're doing and go to the chat and just type in WQA, or just if you can see the emoticons on the participants, just click on the clap button. Let me try doing it for myself. I don't know if I can do it. I mean, yeah. How do I do it like as myself? Never done it while presenting. So you guys can clap, you know, but wait. Now, the certificate that I'm showing you here, most of the times, right, people get you to clap for this certificate. But if you're still clapping, you can stop clapping, right? This certificate is actually a certificate of membership. It's given for all companies that are members of WQA. It doesn't mean anything. You can be a gym member or a golf club member. It doesn't mean that you're the best bodybuilder or the best golfer, right? It just means that you're a member there. The same way, Enagic is also a member of the WQA. Just like other companies they may be a member, I don't even know, but normally they show you the certificate. But what you should actually be clapping for is this, the Gold Seal Award or Gold Seal Certificate from the WQA Association. And this is an award given to Enagic. And not just one of this, but 4 of these certifications have been awarded to Enagic. So if you're looking at your machine, the SD501 or the K8, you see this gold logo right on top of the machine, a big logo, right? So that shows that we have the gold seal. Now, what is the gold seal? It's more or less like to do with if you look at your food and drugs, or your food department, the FDA comes into picture, which takes care of the food and drugs. When you look at the Water Quality Association, the WQA is the association, and they've awarded 4 Gold Seal awards to Enagic. So that's something to be really proud of. And going back to the comparison chart, what the other companies show, they put in WQA and they say they put a tick on their company and put a tick on Enagic as well. But you ask them if they have the Gold Seal certificate, not really, right? Whereas you can go to wqa.org and look in the search and type in Enagic, you will find all the certificates that Enagic has received from WQA, right? So that's how transparent we are. And let's look at point number 3, the only ionizer endorsed by over 6,500 Japanese Doctors Association. Now, this is a certificate given by the Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Diseases,
which states that those 6,500 doctors, they recommend and use the Kangen water for their patients, and they consider it the very best because of its all the capabilities of what the water can do, right? And now today I'm showing you Japanese, right? The reason why we're talking about Japanese certification is because when you look at the medical industry, right, or the hospitals all across the world, most of the hospitals across the world, are they for profit or non-profit? So if profit, you just put in a P, non-profit, you put in an NP, right? Most of the hospitals across the world, right? I'm getting a lot of P's there, right? Mostly profit, right? But when you look at Japan, right, the country of Japan, the people live the longest, right? All the hospitals in Japan by government law are non-profit organization. Now, what it means is that people there, they're not, the Ministry of Health also has certified the Kangen machine as a medical device, which means that they really take care of the health and welfare of the citizens there, right? So that's basically, the point which I'm trying to show you here. And when we trying to show the certificate, the main significance of the certificate is, think about this, when we want to get any medical opinion, we go to doctors because we consider that they're expert in that field.